हाउ आर यू। मैं आज एक और वीडियो लेके आऊँ कनाडा से रिलेटेड। मेरे टाउन में एक डग फेस्टिवल होता है एंड ये काफ़ी अच्छा होता है। लोग आते हैं, अपनी नई नई गाड़ियाँ दिखाते हैं एंड यूनिक गाड़ियाँ दिखाते हैं। आप पूरी वीडियो देख के अगर आपको अच्छी लगेगी पूरी वीडियो देख के कमेंट करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ लोग अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, पर्सनल बिजनेस जिसका जो बिज़नेस है एंड वो अपने स्टॉल लगाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल हैं एंड अच्छे, कोई बहुत सस्ता मिल रहा है, कोई कुछ महंगा मिल रहा है, लाइक क्रेन्स, ग्लासेस, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत चहल पहल थी। आप देख सकते हो कितने वैरायटीज़, कितनी यूनिक चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा लगता है देखने को। एंड कैंडल्स, तो क्या होता है ना, एक नया एक्सपीरियंस था एंड बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही थी एंड ऐसा मैंने डग फेस्टिवल बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली एक कार शो भी है एंड इसमें सब कुछ था एंड देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिला जो कि मैंने कभी नहीं देखा। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें, और जिसका प्राइस भी जेन्युइन था, ज़्यादा महंगी नहीं थी चीज़ें। एंड मुझे नहीं पता इस गाड़ी को क्या बोलते हैं, बाइक है या गाड़ी। एंड इट लुक्स ऑसम, कितनी भयंकर लग रही थी एंड कितना स्कल देख के एंड उसकी गाड़ी की शेप एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। इसमें स्कल बैठा के रखा था एंड लग रहा था कि ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कोई गाड़ी देखी है एंड बहुत अच्छी गाड़ी है। और भी बहुत सारा आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो कि शौक हो जाएंगे, आपने कभी लाइफ में देखी नहीं होगी। कई गाड़ियाँ तो इतनी पुरानी थी बट उसके इंजन ब्रांड न्यू एंड लोगों को शौक होता है यहाँ पे कनाडा में गाड़ी एंड यूनिक गाड़ियाँ रखने का एंड वो कभी कभी चलाते हैं। एंड जो कि मैंने ऐसी गाड़ी, जैसे अभी आप देख रहे हो, ऐसी गाड़ी कौन चलाएगा एंड बहुत पुराना मॉडल भी लग रहा है एंड कई रेसिंग कार्स होती हैं एंड देख के बहुत अच्छा लग रहा था एंड मन कर रहा था ड्राइव करूँ। तो मैं भी लाइफ में कभी ना कभी एक कोई ऐसी गाड़ी तो लेनी है। एंड उसके साथ ही बच्चों के लिए मेला भी था जहाँ झूले वूले लगे हुए थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना भी था एंड सभी उम्र के लोग थे वहाँ पे, बिल्कुल बच्चे बड़े। एंड जो जैसे गाड़ी का शौक मुझे है, और कितने लोग आए थे गाड़ियाँ देखने के लिए एंड पुरानी गाड़ियाँ आप देख सकते हो। एंड कभी भी आप किसी कार शो में जाओ तो टाइम लेके जाना, बिकॉज इतना कुछ देखने को होता है एंड इतना कुछ एक्सप्लोर करने को होता है कि बंदे के पास टाइम होना चाहिए सारा दिन। एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़े से टाइम पे मैंने गाड़ी को देखा। मैं आप लोगों के लिए शूट भी करना था एंड बाकी चीज़ें भी देखना था, जैसे पेंटिंग्स हैं, लोगों ने कितना अच्छा आर्ट, कितनी अच्छी आर्ट्स बनाई हुई हैं एंड देख के लगता है कि यार कितना कुछ है अभी जो मैंने देखा ही नहीं। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें देख के मन करता था ये पेंटिंग ले लो। एंड मौसम भी बेहतरीन, बहुत प्यारा मौसम था, टेम्परेचर 24-25 डिग्री में था एंड सामने ये बहुत बड़ा क्लब है, आप देख सकते हो। एंड गाड़ी जो थी ना, हर टाइप की, हर ब्रांड की गाड़ी वहाँ पे थी। Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Now what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of
can't see the end, but we'll see it through. Get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the एंड बहुत मज़ा आया एंड
बहुत डिफरेंट टाइप्स की कार थी, इतना बड़ा कार शो था वो, एंड इतने डिफरेंट टाइप्स की कार, एंड मैंने अपनी लाइफ में इतने डिफरेंट टाइप्स की कार कभी नहीं देखी हैं। मुझे तो मज़ा आ गया एंड बहुत इंजॉय किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि कार के शौकीन है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।